Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of organizational behavior. Students, today we are going to discuss the 10th lecture of the course, and again the 10th lecture that is associated with the theories of motivation. In this lecture, lecture number 10, we are going to discuss the contemporary theories of motivation. Contemporary simply means some advanced theory, some latest or modern theories of motivation. So here in this lecture, lecture number 10, we will discuss some more theories about the motivation, or simply you can say some modern theories of motivation. This lecture number 10, again, it is the extension of the previous lectures, because all the previous lectures, they were basically related with the theories of motivation. If you remember, students, in the last lecture or in the last discussion, we have covered the following theories. Each theory I have explained into detail. The first theory, that was about the Maslow's need theory, which we already discussed in detail. Simply, this theory argued, or Maslow simply says, that if you want to keep motivated an individual, so you must have to fulfill the following 5 needs. That can be physiological needs, means basic need. Then after that we had the safety need. Then we have the social need. Then after that we had the esteem need, and then the self-actualization. After that we explain the ERG theory. ERG theory, that was basically presented by Adolphus. Adolphus simply argued, or simply we can say that ERG theory, that was the extension of Maslow theory. In ERG theory, the Adolphus basically divided the whole 5 Maslow's needs into 3 groups. That was the existence, the relatedness and growth. Existence, that was similar to Maslow's physiological and safety need. Then we had R, relatedness, related to social and status need. And then we discussed the G, growth, similar to esteem and self-actualization. So then there was a difference between Maslow need and ERG. There is दोनों की यो फर्क हो. Maslow वे चुगुरा हर यो individual चिकम दे step by step the needs को fulfill की. If you want to move to the next level of the need, you must have to be clear the first level need. मतलब safety need तत्लो दे पारा physiological need ज़रूरी दे, social need complete कवलो दे पारा safety need ज़रूरी दे, esteem need दे पारा अवल social safety और physiological दा ज़रूरी दी. लेकिन ERG दा से नवे Adolphus दावे चे ज़रूरी न दा. For example, संगा Maslow हुए individuals can be at all the categories simultaneously. मतलब यो नफर चिकम दे at the same time दो या 3 needs चिकम दे अगा सातलेशी. So that was a basic difference between the Maslow's theory and the ERG Adolphus theory. Then after that we discuss the theory X and theory Y. Chigura theory X and theory Y, it shows the behavior of the employees or managers in the organization. X aga khalaq te sexual ch dal khalaq di, self-directed khalaq nadi. Aga khalaq ti chikam na organization khpala kar bachi tita direction pakari. Why aga khalaq di ch da self-directed khalaq di, motivated khalaq di, change accept kai khpala kar kai. Or simply stated, we can say that X are the active personalities and Y are not the active personalities. Then we discuss the Hesburgh's 2-factor theory. Hesburgh's 2-factor theory simply that way, Hesburgh's way च दो रकम फैक्टर सी मुंग सरा, यो हाइजीन फैक्टर दी और यो मोटिवेशन फैक्टर सी. Hesburgh's दावे च गुरा हाइजीन फैक्टर चिकम दी दा सिर्फ और सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन चिदे दहा मेंटेन सदी. मतलब का हाइजीन फैक्टर चिकम एक्सटर्नल फैक्टर दी कदा मिलावीगी डिससैटिस्फैक्शन चिदे अगा नहीं कन्ना मिलावीगी नो डिससैटिस्फैक्शन वर्सरा फॉर एग्जांपल क्रिएट शी. और रियल चिकम मोटिवेटर दे अगा मोटिवेशन फैक्टर सी, मतलब अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, ग्रोथ एटसेट्रा.
نو دی وی چې د ریل چې کوم دی هغه تاسو موټیویټر فیکټرز دي. بیا هغه نه پس وی هډ د میکلینز تھیوري اف نیډ. میکلین وی چې ګوره یو انډیویجوال موټیویټ ساتلو لپاره we require three sorts of needs. That is the need of achievement, and then the need for affiliation, and then the need of power. Now your individual, if you want to keep motivate an individual, so for his or her satisfaction or motivation, you have to require clear the need for achievement, the need for affiliation, and the need for power. And after that we had the last discussion, that was cognitive evaluation theory. Cognitive evaluation theory simply da argue ko that was basically designed to explain the effect of extrinsic factors on intrinsic motivation. They simply way chukura extrinsic chikam factors dikana aga the individual intrinsic motivation mane ډیر زیات تاثیر لري. مطلب خلق اکثر داسې کارونه کوي چې خپل سیلف سیټسفیکشن لپاره کوي، لیکن که هغه ماغه کار لپاره چې اف صحیح شولا ارګنایزیشن یا انډیویډوال یا منیجران چې کوم دی هغه باندې ایکسټرینزیک فیکٹر فار ایگزامپل وټاکی، نو بیا واټ هیپن د پیپل ویل ډایورټ their intensity will divert from intrinsic to extrinsic. نو دا وایي چې ایکسټرینزیک فیکٹر چې کوم دی هغه د شولا انټرینزیک موټیویشن لیول چې کوم دی انډیویډوال د شولا هغه ډیسټرب کی. and that was the last discussion by the name of cognitive evaluation theory. Last lecture we have explained the following theory. Now today in this lecture we are going to discuss some more advanced theories. Among those theories we will discuss first the goal setting theory, look the theory over, and then goal setting theory I shall try my level best to connect with the concept of MBO, management by objective. We have a guru goal setting theory changa MBO sara connected there ya MBO chede such goal setting theory sara sanga connected there, because goal setting theory practicality chikamada that is MBO. Now MBO chikam de such da basically shelter chikam de the goal setting theory da. And then under the goal setting theory we also will study the self efficacy theory. Already your lecture ke self efficacy theory ma explain kari hum da tasu de para. Upon completion of self efficacy theory we will discuss about the reinforcement theory. Skinner chikama theory work kariwa, and that was about the behavior. Then we will discuss the equity theory. Equity theory theory. Via equity theory then we will also discuss the concept of justice, and we also will study the different stages or types of justice. And the last we will study the Wooms theory, that is expectancy theory. All these are known as your contemporary theories. Matlab 10 taso advanced level ya modern level theories. Now let's start from the first, that is the goal setting theory. Goal setting theory na bachide inshallah idea walu. Ab what is goal setting theory? This was basically presented by Edwin Luke. The theory chikamada da udande kadiwa Edwin Luke. Us Edwin Luke take away sir that the goal setting theory concept sir. If you focus over the name clear of the theory, goal setting theory, it means that somebody, some entity will set the goals for some entity. Matlab yaw kas chikam de abo noro de para goal set kai. Zaka if you focus on the name is goal setting, means set the goals. Simply stated, the concept da de che individual de para manageran chikam de sechwa aga goal sati ya aga goal specified kai. Us taha goal chikam de sechwa it must be accepted, it must be specific, and it must be sexual smart in nature, simply stated. Now back to the goal accepted, the goal specific, or the goal chikam de challenging. Now what the theory says? The theory says that setting goals that are accepted, specific, challenging, yet achievable will result in higher performance than having no or easy goals. Manageran chikam de अगर इंडिविजुअल दे पारा एम्प्लॉय दे पारा सचुला खपला गोल सेट कई उसका कम च गोल सेट कई बेसिकली दा गोल च कम दे इट मस्ट बी स्पेसिफिक मतलब दा दे इट इज क्लियर, इट शुड बी क्लियर स्पेसिफाइड थिंग. Because why am I suppose गोरा you
सेल इंक्रीज कवल वाड़ो उस सेल इंक्रीज कवल के मिस्टर ए कंट्रीब्यूशन बसी नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ए मस्ट बी क्लियर नो चे कला ए दे पारा मुंगा वो चिस्ता कंट्रीब्यूशन दा पकार दे इट मीन दैट आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द थिंग लाइक सपोज तास्ता हुआ है गुरा वी आर गोइंग टू स्टडी द मैनेजमेंट कोर्स उसको मैनेजमेंट कोर्स को मुंगा स्टडी करूं बट इनसाइड द मैनेजमेंट वी हैव सम मैनेजमेंट्स and now I have to specify clear the management like for example this task under the management human resource management it means now I have specified the subject so simply stated kala manager an individual de para goal specified kai no goal by che specific and then difficult goals difficult goal doesn't mean che dura grani sexual che that is not achievable difficult means challenging goal lekin challenging does it is che that can be achievable and the next that is accepted मतलब चे हर चाला accepted मतलब for example your goal ने माँ चे your individual सेट करे दे suppose I have an employee by the name of A माँ your employee दे Mr. A अब माँ Mr. A दे पारा your challenging goal accept करो develop करो अब बाय चे ए तदा पते ही सही चे माँ दे पारा कम goal टाकले दे सही मैनेजर माँ दे पारा कम goal टाकले दा it means now this is basically this goal is discussed with Mr. A so it must be clear discussed so data munga way that is accepted now us goal theory anda हुई जो गोरा मैनेजरान कला हम इंडिविजुअल तक गोल साथी या टाकी या जोड़ई नो अवल खुदा दा it must be accepted टोलो तबाय चाहा accepted because that is discussed with the person मैनेजरान जो for example अगुई तरह डिस्कस करी तो शुरा publicly टोलो दे पारा next thing that should be specific clear and the thing that is challenging unique so difficult but challenging which can be achievable उसको goal setting theory के अक्सर concept में basically से दे चिदा goals must be smart in nature smart means specific measurable attainable realistic and time bound now managers will set goals for the individual with or without anticipation of individual गोल थ्योरी दा हुई जो गोरा मैनेजरान को गोल टाकी इंडिविजुअल दे पारा लेकिन विद और विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल सो नाउ बेसिक प्रीमिसेस assumption से दी जो गोल मस्ट बी स्पेसिफिक डिफिकल्ट विद सेल्फ जनरेटेड फीडबैक हम पकार दे एंड लीड टू हायर परफॉर्मेंस पके पकार होप इंशाल्लाह a bit idea will be clear later on we have some more assumptions or benefits of the goal setting theory यो खुदा दा ची increases the acceptance of the goals हर यो individual ता चेदे goal acceptance accepti अगर reason दा ची गोरा हर यो goal हर यो individual दे पारा जुदा goal दा सही शुरा and the goal must be discussed with that person सही शुरा नो हर यो कस्ता बायत ची सही शुरा यो हुए सारा discussion शुवी सही शुरा discussion शुवी so that will be accepted second thing that it provides for self feedback which means the internal locus of control that guides behavior and motivates performance which simply stated self-efficacy now what that's all that way provides for self-feedback what chikala your goal master discuss shawi mata patte wi for example zama hadaf da de sahi shwa aur zabi achieve koma wala chida ma de para de and I must have to do this so then what will be happen my locus of control will be internal because वली इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कता सो याद माता उसला पहला हम दा खबर क्लियर करी वचे लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब दा दे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जे सूर बज एफर्ट कोमा सचवा आई कैन गेट इट मोर उससे तो गुरी सपोज आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल दे बता तो एग्जांपल दर कोमा गुरा सपोज जे यो गोल चे कम दे अम्मा दे पर डिसाइड छवे दे इफ एनी ऑफ द गोल इज फॉर एग्जांपल डन फॉर मी no gura mata bupati sai shwa chida goal hasila walo de para sai shwa when I will work hard I will get more मतलब सुबह सूरा मेहनत कोमा और बदा गोल से तरला सकमा अब sai shwa de sara बज नूरम तशवीक केगा sai shwa और दिन अलावा तशवीक सरा च कम दे जब खपल एफर्ट हम sai shwa देर ज्यादा पके पुट कमा नो जका दा वही जो कुरा दे बेनिफिट दा दे goal setting theory that it provides for self feedback और self feedback से दे that guides our behavior and the behavior guidance से that is motivation चिकम माता आप सोगे सही हुआ and that will lead to the
performance, which is known as self-efficacy. Don't worry, self-efficacy माने इंशाल्लाह रातुन की स्लाइडों के बाद नूर मराना जवाजों में नूर बम क्लियर को इंशाल्लाह. Don't worry about this thing. Hope inshallah bit idea will be clear. Gura the overall chikam goal setting theory that comes in a start आखिरी सही हुआ वो देखिए कम dimensions दी और बेया कम ज़िक्र ख़त्मेगी. If you focus on this diagram, गोरा goal चिकम दे मैनेजरान goal टाकी individual दे पारा managers they will set clear aside the goals for the individuals with or without anticipation or participation of the individual. दा याद से आते ही दा खबर. No goals चेते it must be specific, it must be difficult. Difficult doesn't mean achievable नहीं मतलब difficult challenging achievable. No once चिकल दा clear शी no goals ना दो outcomes रवोजी. One is the commitment of the individual about the achievement and one is the accepted. उसको accepted किसे दे participation in settings. सही हुआ च मतलब मात्र discussion शो है दे मैनेजर चिकम गोल माते पर टाकले दे सही हुआ I know माता पता था that is accepted to me. सही हुआ नो यो खुदा दा acceptance से बल गोरा commitment to achieving उस commitment to achieving किसे राशि one goals are public मतलब ओवरऑल गोल्स चिकम दे सही हुआ दा टोल publicly explain शवी दी. Then individuals has internal locus of control. हर यू इंडिविजुअल चेदे सही हुआ दे पारा एफर्ट कई बोले अगी तो पता था कि उस फॉर एग्जांपल आई कैन मेक माय फॉर एग्जांपल फेट ज़ख्पल तकदीर चिकम दे ज़ख्पल मेहनत सरा चेंज का बोले शवा देते हुई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल सही हुआ मतलब जमा तकदीर चिकम दे अगर जमा लास्ट के दे इफ आई विल वर्क हार्ड आई विल गेट मोर इफ आई विल वर्क हार्ड सही हुआ आई विल अटेन माय गोल्स एंड देन सेल्फ सेट गोल्स अटेन कवल दे पारा सही हुआ अचीव कवल दे पारा जबरजान दे पारा सेल्फ सही हुआ गोल्स हम सेट कोमा. After the commitment and acceptance, we have the motivation level. Motivation से वही motivation simply means the intention to work toward goal. मतलब how much I am motivated clear toward the attainment of my goals. उसको the motivation चिकम दे the basically effect कीगी सही यदि मने दो effects दी दो variable effects दे यह खुदा the self efficacy दा जमा confidence level. How much I am confident to achieve my goal. That is known as self-efficacy. Second thing, that is national culture. I उस चकम organizational culture दे, for example, the power decision show. सही शुरा देना इलावा decision making show. सही शुरा देना इलावा participation show. That tool से दादमा, for example, organizational या national culture सी. After the motivation level of employees, the next thing is what the progress feedback, and that will lead to the performance. उस चीज़ कमिटमेंट एक्सेप्टेंस सही शुरा दा सिवा कीगी पूरा मोटिवेशन सिवा कीगी. इट मीन्स इफ द इंडिविजुअल कमिटमेंट एंड एक्सेप्टेंस टुवर्ड द गोल इज हाई सो मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल विल बी हाई. इंडिविजुअल मोटिवेशन विल बी हाई सो डेफिनेटली परफॉर्मेंस विल बी हाई. इफ द कमिटमेंट एंड एक्सेप्टेंस सही शुरा टुवर्ड द गोल ऑफ इंडिविजुअल इज लो सो लेवल ऑफ मोटिवेशन विल बी लो. सो व्हेन लेवल ऑफ मोटिवेशन विल बी लो सो देन व्हाट विल बी हैपन परफॉर्मेंस विल आल्सो बी लो. जब परफॉर्मेंस लो कीगी नो गोल अचीवमेंट लो कीगी. जब परफॉर्मेंस हाई कीगी सही शुरा नो फास्ट गोल अचीवमेंट सही शुरा अटेन कीगी. सो दैट इज टोटली क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ योर गोल सेटिंग थ्योरी. तो सिंपली स्टेटेड मां शुरू के साथ हुए फॉर द इंडिविजुअल्स गोल्स विल बी सेट बाय द मैनेजर्स and the goals must be specific, goals must be challengeable मतलब difficult, goals must be accepted. The person will, for example, do commitment that how to the individual will do commitment that how to achieve the goal, so that will lead to the motivation factor, and the motivation will be high, so the performance will be high. So the performance will be high, goal achievement will be, the rate of goal achievement will be high. The whole concept is simply known as goal setting theory. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now I would like to connect this whole goal setting theory with an MBO concept, management by objective. Sometime goal MBO चिकम दे देता मुंगा management by objective या management by performance या management by for example participation हम हुए different नमूना दी सही हुआ. उसको most recognized चिकम नुम दे that is MBO, management by objective. अब what is MBO? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कतस तो यादी ऑलरेडी मुझे डिस्कस करे हम दे
चुगुरा MBO सुदे MBO यो दासी प्रोग्राम दे चे अवल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन दे पारा गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जुड़ीगी ब्यामा हो गोल्स सही शो या ऑब्जेक्टिव चिकम दे अगर सेकंड लेवल दे पारा सही शो मिडल लेवल दे पारा चिकम दे डिस्ट्रीब्यूट की ब्या मिडल लेवल चिकम दे सही शो द गोल इंडिविजुअल दे पारा डिजाइन की सो सिंपली स्टेटेड that is a company wide goals and objectives ब्या goals aligned at all levels and then based on the goal setting theory जैसे हम साथ हुए चुगुरा ब्या से कहीं हर यो मैनेजर चिकम दे सही शो अगर से कहीं अगर हर यो इंडिविजुअल ते पारा गोल टाकी that was basically the concept of MBO management by objectives participatory दे अब look at here cascading of objectives मतलब categories of objectives सही शो आप शार चिवरतो वायू ची गोल संगा टॉप लेवल ना उनिसा या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ना उनिसा सही शो टॉप डाउन अप्रोच संगा रची मतलब संगा शुरू ना टॉप ना उनिसा बॉटम पर रची नो टॉप के गोरा फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंपनी अवल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या कंपनी लेवल गोल जुड़ी स्ट्रेटेजिक चिवरतो वायू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स once your organizational objectives या goals sexual clear she then it becomes the divisional level objectives divisional level ke it can be the consumer product division it can be the industrial product division whatever उसको रा चिकन खबर divisional level तराशी ब्या चिकम दे it must be specified at the departmental level अब डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जानला ऑब्जेक्टिव्स दी सेल्स डिपार्टमेंट जानला ऑब्जेक्टिव्स दी अंडर द कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन एंड कस्टमर डिपार्टमेंट चिकम दे जानला ऑब्जेक्टिव दी सेम इज द केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन मार्केटिंग डिपार्टमेंट जानला ऑब्जेक्टिव्स दी रिसर्च डिपार्टमेंट जानला दी सेक्चुअल डेवलपमेंटल सेक्चुअल R&D चिकम दे आगे से जानला दी ब्या चिकम दे अंडर प्रोडक्शन वी हैव द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव उस हर यो इंडिविजुअल चिदे अगर जानला ऑब्जेक्टिव्स सही हुआ So that is known as the cascading of objectives or the hierarchy of objectives. चिकम सचुरा simply move with you top down approach. मतलब top ना शुरू की organization level ना and it moves to the individual level. सही हुआ? अब उस बलग नूर I would like to explain कि goal setting theory और MBO के से फर्क है. वो कहता theory तासूल वाली MBO and goal setting theory दा most चिकम दे सही हुआ बिल्कुल यो रकम दी. सही संगा यो रकम दी अब देता फ्लेक्स एक्सप्लेन कोमा चुगुरा व्हाट इज अवल लाइक MBO बट डिफाइन कुछ MBO वही से था अ प्रोग्राम दैट इनकम्पसेस स्पेसिफिक गोल्स मतलब यो दासी प्रोग्राम यो दासी टेक्निक चिकम के गोल्स स्पेसिफाइड कीगी ऑलरेडी आई टोल्ड यू पार्टिसिपेटरी सेट मतलब पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग सरा सही छोला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सरा गोल सेट कीगी टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट सही हुआ डिविजनल लेवल मैनेजमेंट दैट कंबाइन द गोल सेट कई मिलके for an explicit time period यो खास टाइम पीरियड दे पारा explicit mean defined time मतलब यो काल दे पारा दो कालों दे पारा द्रि कालों दे पारा शपक में दे पारा that is an explicit time with a feedback on goal progress नो बे दे कि हम feedback system if कता सो नोट करी यो सीज like previous slide तबलार शू if you notice one thing जल्द हो गई that a goal setting concept goal setting की goal स्टडी yes goal स्टडी सही हुआ ब्यागुरा पार्टिसिपेशन सेटिंग हम स्टडी या सेल्फ गोल सेटिंग हम स्टडी यस दा हम स्टडी ब्या फीडबैक सिस्टम हम स्टा यस इट हम स्टा सही हुआ और गोल अचीवमेंट हम स्टा उसका ससुलक MBO तफिकर हो गई इफ यू फोकस ऑन द MBO दा गोरी स्पेसिफिक गोल स्टडी यस स्टडी पार्टिसिपेटिव सेट स्टडी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग सही हुआ दाम स्टा टाइम पीरियड स्टा यस टाइम पीरियड हम स्टा फीडबैक सिस्टम स्टा बिल्कुल फीडबैक सिस्टम स्टा it means all the components that are same ची MBO के कम concepts सी माह goal setting कम शतरे मतलब goal MBO also contains goal specificity participation decision making expression time period performance feedback the salur वाला qualities ची कम दे सही हुआ sorry three qualities the goal setting कम शता MBO कम शता so then what is the difference between the goal setting theory and the MBO management by objective ना यो फैक्टर कता सो सोचू कई सेकंड फैक्टर चिकम दे पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग दा यो दा से फर्क दे जो विच इज एग्जिस्टिंग इन द MBO बट दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द गोल सेटिंग थ्योरी गोल सेटिंग के पार्टिसिपेशन की देशी हुई या की देशी नहीं लेकिन MBO के पार्टिसिपेशन लाजमी दे मतलब मैनेजर चिकम गोल ब सेट कई इंडिविजुअल तरह
that will be the mutual understanding clear of the individual, then they will decide the goal. लेकिन गोल सेटिंग थ्योरी की सदा गोल सेटिंग थ्योरी दा वही कि मैनेजरान च कम दे they will decide, they will define the objective goal for an individual with the participation or without participation. लेकिन MBO की सदे MBO के participation must दे individual सरा दा यो की पॉइंट थे सही चिकम MBO चिकम दे गोल सेटिंग ना लग जुदा शी. हालांकि सही गोल सेटिंग थ्योरी इज द अम्ब्रेला ऑफ फॉर MBO चिकम दे कल हम सेट कीगी नो अंडर द गोल सेटिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट सरा सेट कीगी. होप इंशाल्लाह आइडिया विल बी नाउ क्लियर टू यू. द कम च थ्योरी माता सुला टोला एक्सप्लेन करा ना पूरा दा थ्योरी चिकम दा बस दा सुला उस दलता एक्सप्लेन हम कमा नो डिटेल के ओवरऑल चिकम खबर माता सुकड़ी दी चिगुरा MBO और गोल सेटिंग किससे कनेक्शन है. दा दिस्तासो सरा MBO रेड वन और दा दिस्तासो सरा गोल सेटिंग थ्योरी और दा दिस्तासो सरा कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स पूरा गोल स्पेसिफिसिटी या गोल स्पेसिफिकेशन MBO हम किश्ता यस गोल सेटिंग थ्योरी किमश्ता मींस गोल specification या specificity that also exist in MBO yes and it also exists in goal setting theory. मतलब दोनों किश्ता yes yes. Goal difficulty mean challenging tasks. It is also under the MBO, it is also under the goal setting theory. दोनों किश्ता yes. Feedback system MBO किमश्ता yes सही goal setting theory किमश्ता. उस तक कम च participation system ले पार्टिसिपेशन सिस्टम मतलब इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन सिस्टम सही विद द मैनेजमेंट. गोल सेटिंग थ्योरी के MBO की चले सही पार्टिसिपेशन सिस्टम श्तरे और गोल सेटिंग थ्योरी के नश्तरे. इट सिंपली मीन्स कि गोल सेटिंग थ्योरी के इंडिविजुअल दे पारा एम्प्लॉय दे पारा मैनेजरान गोल टाकी सिर्फ फिर तो वायना कही. लेकिन MBO के सही पार्टिसिपेशन चिकम दे सॉरी गोल सेटिंग चिकम दे आ इंडिविजुअल सरा सही नास कीनी सही वर्ता वही और ब्या म्यूचुअली चीजें डिफाइन की. इट मींस that individual participation is available clear in the MBO but that is not available in the goal setting theory. No the yo point participation individual participation chikam de lasa saishwa MBO is different from the goal setting theory ya goal setting theory is different from the MBO theory. Baki dwada chikam de yo rakam kar ki कल हम गोल सेटिंग की सही या गोल सेटिंग थ्योरी अप्लाई की आगे ना पस चिकम दे ऑर्गेनाइजेशन MBO कॉन्सेप्ट माने राशि सही होप इंशाल्लाह अ बिट आइडिया विल बी क्लियर नाउ. नो देख लक द खरे सही कॉन्सेप्ट है देखे फर्क सरे नो द फर्क मता सुला क्लियर को गुरा MBO emphasizes on participation goal setting while goal setting theory goals assigned as well as participatory can be equally effective. मतलब गोल सेटिंग वाइज का पार्टिसिपेशन उस वाला दा मोर इफेक्टिव छी मतलब च मोस्टली सही वाला पार्टिसिपेशन न कीगी. दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन सही वाला टू द थ्योरी. होप इंशाल्लाह अ बिट आइडिया विल बी क्लियर. नाउ सेल्फ एफिकेसी च कमदा इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इनटू माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.